अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। दावा किया कि चीनी सदर को भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। वाशिंगटन में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिकी फ़ौज की वजह से ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। We have the greatest military in the world. I was with President Xi, and I said to him, we have the greatest military in the world, and he actually didn't agree. We had a great meeting. He actually didn't disagree with me on that very much, I will tell you. But we really do. What we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। दावा किया कि चीनी सदर को भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। वाशिंगटन में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिकी फ़ौज की वजह से ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। We have the greatest military in the world. I was with President Xi, and I said to him, we have the greatest military in the world, and he actually didn't agree. We had a great meeting. He actually didn't disagree with me on that very much, I will tell you. But we really do. What we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.